अब तक सारा देश जान गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। जो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा, पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस। दूसरा रास्ता था ठेका लो चंदा दो, यानी कि पोस्ट पेड घूस। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियों का रास्ता, यानी कि शेल कंपनी द्वारा चंदा लो। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। आज एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, जो आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देगा बीजेपी की क्या रणनीति है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है। पर हम डरने वाले नहीं हैं। अजय माकन जी ने जो अभी वो खुलासा करने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी गहरा विश्लेषण किया है और ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और उस पर अजय माकन जी, जो खुद कंप्यूटर भाषा से वाकिफ हैं, मैंने आपको 4 दिन पहले पाइथन भाषा के बारे में कहा था। आज उन्होंने पाइथन के बाप, कंप्यूटर में पाइथन का बाप भी होता है, अजगर का बाप भी होता है, उस बाप का नाम है आर लैंग्वेज। इस आर कंप्यूटर भाषा को जो हम रिलीज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो बीजेपी की अकाउंट की जानकारी है, उसका विश्लेषण हमारे कोषाध्यक्ष जी ने किया है। मैं अभी अजय माकन जी से गुजारिश करूंगा कि विस्तार से आपको ये सनसनीखेज खुलासे के बारे में आपको पूरी जानकारी दें। अजय माकन जी, कैन आई जस्ट से इन इंग्लिश 1 minute? As most of you know, the electoral bond scam, through the electoral bond scam, the BJP collected over 8,200 crores as donation. There were different routes. There was a prepaid bribe route, there was a post-paid bribe route, there was a post-raid group, chanda dhanda, raid, paid, and there was a shell company route. Today, our treasurer Ajay Makanji has analyzed the data that has available on the ECI website that has been filed by the BJP. He's used a high-level programming language called R, and he will now disclose some sensational details of the accounts of the BJP, which shows the complete hypocrisy of the BJP, which is engaged in tax terrorism. ये कर आतंकवाद है और कुछ नहीं है। और ये कर आतंकवाद का शब्द पहली बार बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया था। और ये कर आतंकवाद के हमले जो हो रहे हैं, जो टैक्स टेररिज्म अटैक हो रहा है कांग्रेस पार्टी पर, उसका जवाब बीजेपी की भाषा में ही आज हमारे कोषाध्यक्ष देंगे। अजय माकन जी। धन्यवाद जयराम जी। साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
आज की ये प्रेस वार्ता हम लोग मुख्यतः दो भागों में इसको बांटेंगे। सबसे पहले तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड भाजपा की सरकार ने नहीं रहने दिया अपने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से, और कैसे बीजेपी को फेवर किया जा रहा है और इनकम टैक्स की उन्हीं धाराओं का इस्तेमाल करके कांग्रेस को पिनलाइज किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ आंख बंद किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस बात को की जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा भाग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को तंग करके कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को एकदम से पंगु करा जा रहा है, अपंग किया जा रहा है आर्थिक तौर के ऊपर। ये हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा भाग होगा। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि where the treasurer of any political party or any other person authorized by the political party in this behalf fails to submit a report under subsection 3, then notwithstanding anything contained in the Income Tax Act, such political party shall not be entitled to any tax relief under this act. तो कोई भी exemption लेने के लिए इस जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इसके अंदर है उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर कोई भी वायलेशन होती है, जो ट्रेजरर अगर उसको करता है तो उसको एग्जेम्पशन उसकी विड्रॉ हो जाती। और इसके अंदर जो सेक्शन 29C के अंदर जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा फॉर्म नंबर 24A है। ये दोनों की दोनों चीजें 29C और परफॉर्मा जो फॉर्म 24A है, ये हमने बैकग्राउंड नोट सर्कुलेट किया है, आप लोगों के फोन में अभी तक के आ गया होगा, उसमें दोनों की दोनों चीजें हैं। तो आप लोग अगर इस पे भी ध्यान देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसके अंदर जो मुख्य बहुत बेसिक चीजें मांगी गई हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बताए कि किससे उसको डोनेशन, नाम बताए कि किसने उसको डोनेशन दिया और उसका एड्रेस बताए कि किसने उसका डोनेशन दिया, और अमाउंट बताए कितना डोनेशन दिया, और ये बताए कि चेक में दिया, आरटीजीएस में दिया, और 20,000 से ऊपर जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उसका इसमें जिक्र करना होता है। और जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टी देती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो देती है इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पे डालती है। हम लोगों ने पिछले 2 साल में इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट में डाला और जो 2017-18 जिसके आधार पे हमारे 135 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से छीन करके ले गए, हमने वो दोनों सिर्फ एनालिसिस करी। तो ये इस प्रकार से जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर पॉलिटिकल पार्टी का मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का। और जो हमारे सिर्फ 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर बीजेपी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने, मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना है। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि, 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली, और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने
जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए, वो जानकारी बीजेपी पार्टी ने वेबसाइट पर है, उसका विश्लेषण करके इन्होंने ये तथ्य आपके सामने रखा है। तो इसको एलिगेशन मत कहिए। ये 4620 4620 राइट 4600 करोड़ रुपया जो वायलेशन है, ये एलिगेशन नहीं है, ये एआई के द्वारा जनरेट किया गया है। मगन जी, सवाल ये है कि इलेक्शन अपने शबाब पर है, आप लोगों के पास, कांग्रेस खाते के पास पैसा नहीं और बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं। इलेक्शन आम लोगों की भाषा में किस तरह से प्रभावित हो रहा है आप लोग का चुनाव प्रचार? किस तरह से डे टू डे जो एक्सपेंसेज हैं वो कांग्रेस नहीं कर पा रही, लोगों तक ये बात कैसे पहुंच रही है? देखिए, ये तो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि क्या स्थिति है और बीजेपी की क्या मंशा है, ताकि आप लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा जा रहा है। अभी इसको इससे भी जोड़ करके देखिए, एक तरफ तो बीजेपी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड्स का पैसा उनके पास है, हजारों करोड़। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से जमा कराया है पैसा, उसमें नाम नहीं दिए डोनर्स के, उनके एड्रेसेस नहीं दिए डोनर्स के, वो एक वायलेशन अलग से, वो भी इलीगल है। एक तरफ तो इलीगल पैसे के ऊपर पैसे को देख करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आंख बंद कर रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो क्राउड फंडिंग से हमारे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो हमारे यूथ कांग्रेस ने मेंबरशिप ड्राइव से पैसा इकट्ठा किया, जो एनएसवाई ने जो जेब खर्ची जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पैसे हैं, उनके ऊपर डाका डाल रहे हैं। 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी ले गया है, जो कि हमारे इलेक्शन में खर्च हो सकता था। तो अगर आप पिछले बार के अगर इलेक्शन में एक्सपेंसेस से कंपेयर करें तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है 20% के करीब तो इलेक्शन कमीशन हमारे बैंक अकाउंट से उठा करके ले गया, जो हमारा पिछली बार इलेक्शन में खर्च हुआ था। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से है? ये डेमोक्रेसी में अगर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी पे ऐसा हमला होगा तो कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ये लोगों को समझने की जरूरत है। और अगर फिर ये ऐसी पार्टीज को वापस मौका देंगे तो ये अगली बार तक के तो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं। सर, पहले फेज के चुनाव का नामांकन खत्म हो चुका है। कोषाध्यक्ष आप कांग्रेस पार्टी के हैं और क्योंकि चुनाव लड़ना है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी? कैसे आप रिसोर्सेज जनरेट करेंगे ताकि इलेक्शन लड़ सके? देखिए, हम लोगों के पास में प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब हम लोगों के तैयार है। आज हम सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूं कि हम लोग जो हैं हर तरीके की प्रेशर के लिए, उसको झेलने के लिए, उससे लड़ने के लिए आक्रामक तरीके से हम लोग तैयार हैं। हमारे पास में हर तरीके की इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए प्लान्स हमारे पास इन प्लेस हैं और हम लोग उसको समय आने के ऊपर उसका उपयोग करेंगे। Hi, this is Sameer. I'm from New York Times newspaper. You are clearly at the disadvantage in terms of resources and other things. What does it say about the prospects of the free and fair election in this country? Because when you have like large opposition parties having not those kinds of resources to fight that kind of thing. Thanks. Under these circumstances, we are trying to give our best performance, but the question which you asked was about free and fair elections. So already you can see that it won't be a free and fair elections, because the most important thing is the resources. If we are not allowed to utilize our own resources, 135 crores from own bank account was stolen by the BJP ruling party, which is around 20% of what we spent last time. How can it be a free and fair election? And we are facing another onslaught on our accounts, because now 1823 crore rupees of demand notice has come to us. It means that they are going to do the same thing which they did last time with just 135 crore of demand notice. So this in no way seems to be a free and fair election. The democracy is under attack, and this they are doing to the principal opposition party, the Congress party, and other parties also. While I was coming, I got information that at least 2 other opposition parties also have got similar notices for the year 1993-94. So imagine these tax notices from 1993-94 are being sent to ensure that the political parties are unable to spend their entire amount of money which they have collected from their own resources. माकन जी, कल प्रधानमंत्री ने कहा, ट्विटर पे कहा कि भाई कांग्रेस बाज नहीं आ रही है और दबाव डाल रही है। मतलब 70 साल से आप सत्ता में थे,
और अब 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, सिर्फ 3 राज्यों में आपकी सरकार है, फिर भी आपकी इतनी हिम्मत हो रही है कि साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं आप? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सनसनी के खुलासे पर है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसका जवाब कल ही हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और मैंने दे दिया है। ये आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पे खतरा है और ये इनकम टैक्स से टेक्निकलिटीज का मामला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको इनकम टैक्स से क्यों जोड़ रहे हैं उसको? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश के सबसे अच्छे लीगल ब्रेन्स की हम मदद ले रहे हैं और हम इसको कानूनन हम लोग इसको टैकल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट में हमें कहना होगा, जो बात आपने कही है वो भी कहेंगे और जो जिस तरीके से हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, वो भी बात हम कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कहेंगे इसकी स्ट्रैटेजी आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना ठीक नहीं, लेकिन आपकी बात भी वाजिब है। एक दो सवाल यूट्यूबर से ले लो। सर, माकन जी 135 करोड़ रुपए का लियन और 1800 करोड़ रुपए का डिमांड नोट, इन दोनों पैसे को हटा के कांग्रेस के पास कितना पैसा बचेगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? आपको लगता है कि इसके बाद में भी कुछ बच जाएगा? Mr. Makan and also to Jairam, we've been reporting this story of tax notices for the past 1 month. But as just following up on Sanjay ji's question, why haven't you gone to the Supreme Court? One, you haven't done any political action of taking to the streets, taking out protests. There's not enough pressure on the government. If you feel that this is a deliberate act to deny you a level playing field, then there's no adequate response to that action. First of all, I don't agree on both these counts. We went to the Supreme Court 3 times. So we have gone to the Supreme Court 3 times on these matters, and on 1st April we are going again. We went for an early hearing also to the Supreme Court, but Supreme Court said since we'll be hearing you out on 1st April, there is no need for early hearing. So on 1st April, there is already it is listed there. We went to the Supreme Court for an early hearing also, but Supreme Court said that no need for an early hearing. So it is not that we are not going to the Supreme Court. We have gone to the Supreme Court 3 times. And on 1st April, we expect Supreme Court to give us some relief. And second is on hitting on the street. We've had demonstrations across the country in all all state headquarters on this issue. We've had demonstrations twice, and from next week onward, we are going to scale it up. And you may recollect that Sonia ji herself, along with Kharge ji and Rahul Gandhi ji, came here to address this issue. Give me a single example when Sonia ji, Rahul ji and Kharge ji, all 3 of them together, Jairam ji, myself, the entire KC Venugopal, all of us, we took up this issue. So be it in the court, be it in the public, or also on the street, we are very serious, and whatever best we can do, we are doing. It's a threefold question. The IT one question. When the ITAT had actually heard this matter, it had noted that the 20% demand that the IT department had made, you'd not paid that, and the IT proceedings that had started, recovery proceedings, were from 2021. Then why was this 20% not paid? And even at the High Court, when it was hearing this particular matter, Justice Yashwant Verma had a clear question to ask, that was the Congress party, sleeping till 2021? Yeah. Very good question. I think this should be answered. When IT department was asking 20% at that time, 20% of 135 crores meant 27 crores. And we didn't have that much of money at that time. And once you give 20%, it is very difficult to take it back. This is the first. So when in this case, in this way, now they have raised a demand of 1823 crores. So should we be paying them 400 crore rupees? To the income tax department? Should we be paying? Do we have this much of money?
And this is the, when they had asked us to pay 20%, that was the time when we were facing state elections. We didn't have money. So this money we had collected all through last year to fight the parliament elections. And they took away all the money and they are asking for more money. So if suppose 20%, using this 20% logic, if we pay now, we may be required to pay 400 crore rupees. So should the opposition party first pay 20% bribe to Narendra Modi's government and then contest the elections? Is this a level playing field? And 20% for just 27 crores for just 14 lakh rupees violation. Whereas for 42 crores of violation, not even a single penny is being charged from the BJP. One of the reasons why, to add to what Mr. Markan has just said, that 20% is an admission that there is something that we have done wrong. When fundamentally we are arguing that the order itself is flawed and it is biased and it's politically motivated, to cough up 20%. You know, this is like chanda do, dhanda lo. This is what the BJP did on electoral bonds. It took the money and then gave the contract. You can't do that on income tax assessments. And secondly, there is no guarantee that if our appeal is upheld, that 20 crores is in fact going to come back. So it's easy to say that this 20 crores should have been paid, but the political economy of the 20% is that this income tax order was fundamentally rooted in a desire to cripple the Congress party financially and to make the 2024 election unfree and unfair. That is the strategy of the BJP. Yeah. Sir, how many accounts do you have? How many are frozen currently and how many are not frozen? And how much money did you raise from your crowdfunding exercise? In total in Delhi, we have in our 4 banks around 11 accounts. And when I say 11 accounts, I am talking about NSUI and Youth Congress. And this is, I am talking only about Delhi for the Indian National Congress. They had first marked lien in all our 11 accounts to the limit of 135 crores in some banks and to the limit of 75 crores in some banks. They did this on 13 February. And unfortunately for us, in none of these bank accounts, in any of these bank accounts, we had more than 135 crores or 75 crores. So in all these 11 accounts, effectively, 280 crores got stuck because there was no way to reconcile amongst the banks, and there was no way that we could have taken out money and put it in one bank because the entire money was marked as lien. So we were unable to utilize full these 280 crores. So you imagine, at the eve of elections, from 13th of February, for 5 weeks continuously, we were unable to utilize our 280 crore rupees. This was the first thing. Then the income tax department took away 135 crore rupees from these, out of these 280 crores. And it was day before yesterday evening that we were able to take out our entire amount of money and pay as advances for our election campaign. Just day before yesterday. And perhaps our last week's press conference played an important role, because after that only the government, perhaps, or the bank or the income tax department allowed us, because we were not allowed at that time. Whereas the news was being planted by the CBDT, by the income tax department, that no account is freezed. Right from day one, they were saying no account is freezed. Technically, they may say no account is freezed, but just tell me, when they have marked lien of 135 crores in a bank where we have 90 crore rupees, in another bank where we have 40 crore rupees, in another bank where we have 30 crore rupees. So effectively 90 plus 40 plus 30, the entire amount is locked, freeze. So when we were unable to utilize our 280 crore rupees, the entire amount was frozen. The entire amount was marked as lien, out of which they forcibly took away 135 crores from us, even when the case was going on in the High Court. So this is the high-handedness of the government, which you all should understand. Any more YouTubers?
crowdfunding, our crowdfunding, we in just 1.5-2 months we were able to collect 25 crore rupees, and it was around 50 lakh rupees a day at an average we used to get. But as soon as the message went that our accounts are frozen, we also didn't encourage people to give money because accounts was frozen. We never knew how much from this amount the government will, the income tax department will take it back. But 25 crores was what we were able to, and it is the highest in recent past any political party has been able to collect through crowdfunding. Mr. Bakin, when the Delhi High Court rejected your plea, it also noted that the tax department appears to have collected substantial and concrete evidence warranting further scrutiny and examination. In background to this, given this statement Because High Court has the same bench has rejected 3 times our appeal. So which one are you talking about? This is the 28th March. Okay. Judicial system or take a judicial course for recourse. This is just which came yesterday, and there are many legal matters pertaining to this, and we are going to Supreme Court. We are filing SLP in the Supreme Court against this decision of the High Court. So this is what is under preparation, and this is what we are taking to the Supreme Court. Acha, I had kept it for another press conference, but Jairam ji wants me to announce that I am filing a PIL to take 4,600 crore rupees from the BJP on the basis of what we have got now, what I have just told. So we are approaching court, and as a PIL, we are going to approach courts. We'll see which court, which level. We'll see which court. We'll see which court, which level to approach. माकन जी सवाल इधर से. Let us see. We'll discuss. माकन जी, Congress party, we are thinking to file. We are thinking to file a PIL. आप पूछ लो. He is not just a treasurer. During the COVID pandemic, he is one person I know who spent his time very productively. He's become one of India's leading computer programmers. He can program in Python, he's program in R. He can get a job in any top software export company. So when he has applied R language to the ECI data, I think these are nothing to be sneezed at. He's more than a treasure. One thing I would like to clarify. Jairam ji does not mean that I am quitting politics. माकन सर. हाँ. देखिए, हम लोगों ने ये तय किया है कि बीजेपी के अकाउंट्स में जो कमियां हैं, जिसको इनकम टैक्स ने नज़रअंदाज किया है, जैसे मैंने बताया कि हर साल जो उन्होंने अकाउंट सबमिट किया है, उसमें हजारों लोगों के एड्रेसेस और नाम तक नहीं डाले हुए हैं, और करोड़ों रुपए उनके नाम के डोनेशंस वसूल करे हुए हैं. अगर यही हिसाब लगाया जाए, वायलेशंस इनकम टैक्स के लगाया जाए, तो 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी को इनकम टैक्स को देना पड़ सकता है पिछले 7 सालों का ही केवल. तो इसको लेकर के हम लोग सोच रहे हैं कि हम PIL डालेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, और कौन डालेगा, किस कोर्ट में डालेंगे, इस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम PIL लेकर के हम इसको जाएंगे, और बीजेपी के से 4,600 करोड़ रुपए की डिमांड करी जानी चाहिए, ये हम मांग करेंगे. माकन साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, देश से बाहर भी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने का मुद्दा उठाया जा रहा है. UN में ये मुद्दा उठाया गया और ये कहा गया कि भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इसको लेकर कंसर्न जताया गया. आपको लगता है कि देश की छवि भी इससे खराब हो रही है? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये हमारा आंतरिक मामला है और हमारा संविधान सक्षम है. मैंने पहले भी बोला, हमारा संविधान सक्षम है, हम लोग सक्षम हैं
कि अपने आंतरिक मामले को हम खुद ही सुलटाएं। हमारी न्यायपालिका मजबूत है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। तो हमें किसी भी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, किसी विदेशी ताकत की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं और हम इस मसले को हम खुद उठाएंगे और बाहर की किसी की भी हमारे को मदद की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन। Hi, thank you so much. Two things, sir. Firstly, the 31st March India Alliance protest. A, do you have permission from the Delhi police to protest on Ramlila Maidan? And two, for an international audience that likes to see a big picture, because that's what I represent, can you tell us the importance of that protest on the 31st? A, permission from Delhi police, and B, think the importance. Permission part I will say, and the other things Jairam ji can say. Permission, yesterday evening I was told that the police has permitted. Yesterday evening I was told that we've got permission. The Joint Commissioner has informed that we've got permission. This is what was told to me yesterday. Rest of the things I think Jairam ji can explain. No, this will be the second major India Group rally over the last 10 days. As you know, we had at the culmination of the Bharat Jodo Nyaya Yatra on the 17th of March in Shivaji Park in Mumbai, we had a very major India Group rally in which leaders of all the members of the India Group participated. And it's expected that the 31st rally in Ramlila grounds would be a similar such occasion. Well, the main objective is to highlight the threats to democracy by the actions of the BJP, the determined actions of the Prime Minister, who ensure that we are one nation, no election, that this is going to be an unfree election, unfair election. The Election Commission did not even meet the India Group on the issue of 100% VVPATs. Now they've unleashed tax terrorism. This is nothing but tax terrorism against the Congress and a few other opposition parties, reopening tax records going back 34 years, 32 years, making completely unjustified and unreasonable demands while allowing the BJP to go scot-free by the same yardstick. And then, of course, indulging in this horrendous scam which has been declared unconstitutional by the Supreme Court, the electoral bonds. So this is a political rally and it's meant to demonstrate solidarity against the authoritarian regime of Mr. Modi, who is hell-bent on decimating all opposition parties. It will not be proper for me to divulge, but I'm saying when I'm saying that two opposition parties, and they are part of India Alliance. They are part of the India Group. They are part of the India Group. Thank you. Aji Manjari. Manjari. इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है और इसे लेकर 31 तारीख की रैली कर रहे हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी जो है इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी से जोड़कर उसको मुद्दा बना रही है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या उस कॉज को सपोर्ट कर रही है या उस बैनर के साथ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है और हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भी लोकतंत्र की हत्या जो इस पूरे रैली की थीम है उसको मानती है और उसमें सभी बातों को रखा जाएगा। जिस तरीके से हर ऑपोजिशन पार्टी पीड़ित है इस वक्त, सभी बातों को रखा जाएगा, ऐसा हमारे को उम्मीद है और ऐसा ही होगा।